So, Mr. Alok, welcome to MargDarshan. First of all, give your brief introduction. Sir, I am Alok Godial. I am from Pauri Gadwal, Uttarakhand. I completed my 12th from my hometown, Pauri Gadwal, and after that, I completed my diploma from Government Polytechnic College, Srinagar Gadwal. After that, I took admission in BTech from GBPIT, Gurdwadi, Pauri Gadwal itself. And then after that, I got passed out in 2023, and uh, then onwards, I am preparing for government exam. Okay. What are your hobbies? Personally, I love to play video games, and traveling is my hobby. Okay. What kind of video games you will like? Sir, I was since childhood I played all type of video games, but in my teenage I played multiplayer type of video games and played tournament in the video games also. See, in present, younger generation are addicted toward video games. What Yes, are sir. your point of view on that? Generally, video games is considered as a time waste for a younger generation. But I think if anyone passionate about it, it can be become its own career also in this domain. Because when I was in my teenage, then I also play video games and earn some money from it. And my friends, they become some of them become very good at it, and with playing video games they learn some skills like editing and freelancing, and they do so much in it. So I think there are also pro and cons both into it. Okay. What are the recent trends in oil and gas industry? Recently I think oil and gas industry are more uh, uh, developing their renewable energy and hydrogen gas plant, and more for they are seeking more alternative for the non-conventional energy sources. Okay. And HPCL is focusing on which type of non-conventional energy sources? HPCL is generally nowadays they are uh, going for solar energy. They are going for hydrogen fuel also. And Okay. Right. How do you want to join HPCL? uh, actually, HPCL is a very reputed company in our country. So it's like it's give you a vital space to grow and manage a certain more things and grow professionally, and it we get connected to more mindful peoples in it. And I think this will become as a core engineer. I think this will become a dream job for an engineer. Okay. What is your final year project? So my final year project is regarding landmine detection system. What is landmine detection system? So in it, basically we made it metal detection type. Like uh, we use a coil and A88 metal detector, which consists of an inductor in it, which work on the resonance principle, like it sends oscillating waves, and whenever any metals come through it, it uh, uh, it generate eddy currents in it, and whenever it disturbs oscillation, then it started sound like beep sound, and we
We control it through an RC. We implanted it on RC car, which we control through our mobile phone by Bluetooth. Okay. So let me test your technical domain knowledge also. What Yes. is a capacitor? Sir, capacitor is generally used to store electrical energy. It electrostatic energy. It consists of two parallel. There are three types of capacitor, like parallel capacitor, cylindrical capacitor. So generally, Okay. we in parallel capacitor we have generally two plates, and there is an dielectric between them, where the electrostatic energy is stored, and the other two plates, one is positive plate and other one is negative plate, where charge is stored. What is the purpose of dielectric between that two plates? The dielectric is where the energy is stored actually. Okay. What is the difference between ideal capacitor and practical capacitor? Ideal capacitor generally don't have leakage resistance, and in Okay. practical we have an leakage resistance also. Can you draw the diagram of ideal capacitor and practical capacitor on paper? So I don't have much idea about Okay. What is power factor? the power factor is uh, ratio between active power and apparent power. It shows us the how much real energy we are using, and how much effective energy we are using, rather than only and how much total energy, how much reactive power in it. What is reactive power? The reactive power is a power don't which did not affect in real world, but it helps to um, helps to generate magnetic energy, like in machines. We are it convert it used to in electromechanical conversion, and helps to move machines. Suppose, let me give you an example. If there exists a machine and we have to give it some power and some energy is used to create magnetic field. If the reactive power is given separately to that machine or only active power is given, how you will differentiate between active power and reactive power? Sir, sir, in motor, Yes, in motor. sir, there are two excitation in any motor. Like one is from three-phase supply, and other one is which we give from DC supply. DC supply is used to establish flux inside it. So when we so if whenever the flux is cut by the rotor by conductor, then electromechanical conversion happens. Then so both type of energy required for that. The power factor of an electrical machine is more or less. What we will prefer, the power factor of machine. Sir, we prefer higher power factor approx one. Okay. What is the difference between singly excited and doubly excited machine? Give some Thus, example of that. the singly excited machine is that in which we give only one excitation, like uh, our induction motor, and doubly excited, in which we have give separately excitation for flux establishment, like DC and synchronous. Okay. What is corona?
Sir, corona is a type of power loss. It's happen when uh, at a high voltage. If di it, it happens when uh, dielectric breakdown of air happens across the conductor at high voltage. So there will be some hissing sound and noise, hissing sound and some flash produces across it, and there will be losses also. So, Okay. How to reduce corona? to reduce corona, uh, we use we use bundle conductors. Uh, Okay. How bundle conductor reduce corona? Sir, we used to increase GMR to reduce corona, so that electric field will be lower. Uh, so in bundle conductor, we increases bundle conductor increases GMR of a conductor, so it can reduce corona by reducing electric field. What is the meaning of GMR of an conductor? So GMR of a conductor related to geometric mean radius, which is the radius of a conductor own conductor. Uh, so Okay. ठीक. Your interview is over. I am giving you feedback. थोड़ा सा एचआर पोर्शन पे आप थोड़ा सा वर्क करिए, क्योंकि मोर क्वेश्चन आपके एचआर से ही इंटरव्यू में आप होंगे। टेक्निकल क्वेश्चन मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ बैक टू बैक, ये इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं चीजें बैक टू बैक। जैसे कि मैं लगातार कोरोना में पूछता चला गया, तो आपको पैनिक नहीं yes, होना। ये भी हो yes सकता है sir, किसी स्टेज पे जाके आप फंस जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पे बोल देना सर इतना याद नहीं आ रहा है, या ऐसे भी आई कैन नॉट रिमेम्बर सिंपली। ठीक है, okay sir, पैनिक नहीं होना है कि कंटिन्यूस मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपको हर चीज पता हो। yes हाँ, sir, ये जरूर है कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं, जैसे जीएमआर आपने बोला, तो उसका मीनिंग पता हो तभी आप बोले, नहीं तो फिर आप रुक जाए वहीं पे। अगर yes वो sir, उस डायरेक्शन में इंटरव्यू आगे बढ़ता था तो ठीक है। अगर आपको उसके आगे का नहीं पता तो आप वो फिर वर्ड मत यूज करिए। नहीं तो मे भी हो सकता है कि कोई आप ऐसा वर्ड बोल दे जहां से वो अगला क्वेश्चन पुटअप कर ले और आपको ना पता हो। yes sir, तो थोड़ा सा आप उस डायरेक्शन में थोड़ा सा सोच के बोलिए, आराम से, टाइम ठीक, लेके। पैनिक नहीं होना है, और बेसिक बेसिक थोड़ा डेफिनेशन रिवाइज करिए कि कोरोना हो गया। ठीक है। yes सर, अभी मैंने रिवाइज आईडी नहीं किया, बता दो। ठीक है। आइडियल कैपेसिटर और प्रैक्टिकल कैपेसिटर का डायग्राम आप एक बार देखिए, क्या yes डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बेसिक डिफरेंस yes और डेफिनेशन देखिए आप। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर में कंफ्यूज नहीं होना। yes sir, एक बार डेफिनेशन आप उसकी भी देखिए, पावर फैक्टर का देखिए थोड़ा सा। yes मशीन्स sir, में थोड़ा सा एक बार बेसिक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखिए आप। मेनली सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन, इन पे फोकस ज्यादा करना है। मशीन्स में भी ज्यादा फोकस करना है ट्रांसफार्मर पे, इंडक्शन पे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक okay है। sir, उसके बाद फिर अभी एक बार और अच्छे से आप रिव्यू चीजें ब्रशअप करिए, उसके बाद फिर से हम एक और मॉक लेंगे। ठीक okay है। सर। सर जैसे मैंने कोई मतलब प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किया है, तो मेरे फाइनल ईयर से ही पूछा जाएगा? अब मतलब प्रोजेक्ट एचआर में आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है कॉलेज के बाद, खाली नहीं, प्रिपरेशन ही कर रहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो रिसेंटली के ही पास आउट हैं, आपका है। गैप यस उतना सर, तो नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैप अगर आपका 2 साल से ज्यादा है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में भी हो सकती है। एक 1 और 2 ईयर को गैप कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ओके मोस्टली सर, आप थोड़ा प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लीजिए, एचआर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, बेसिक ओके, बेसिक टेक्निकल नॉलेज। क्योंकि एचपीसीएल में हर राउंड एलिमिनेटिंग है, तो अगर हर राउंड बहुत टफ होगा तो लास्ट तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो यस मेनली सर, जीडी जीटी पे ज्यादा फोकस करना है। मार्गदर्शन के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार जीडी जीटी डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यस इंटरव्यू में सर, टाइम कम बचा हुआ है। तभी आप इंटरव्यू तक लास्ट तक पहुंचेंगे। यस सर, ठीक है। और उसके सर, बाद इंटरव्यू में भी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। मैं जितना आपसे पूछ रहा हूँ मैच टू मैच इतना, बस इससे ज्यादा नहीं। ये ओके मैक्सिमम सर, लेवल है। बस ये कि क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं आपसे, अगला वाला आप जैसे कोरोना बोला,
तो अगला जो बोल रहे हैं कोई ऐसा वर्ड यूज करिए या तो आपके बारे में पता हो, नहीं तो वो वर्ड ही मत आप यूज करिए, वहीं ओके पे सर। रुक जाइए। और अगर आपको पता है अच्छे से, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है, तो आप बोलिए, मे बी अगर उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ यू मे लीव।